Okay. Somebody needs to tell me if the screen is visible. Yes, sir. Great, thank you. So just want to take a stock of where we are. We started off with the basic probability counting, permutation combinations. Then we went into random variables, and we said that random variable can be defined as a mapping of the outcomes of a random experiment onto the real line. So random variable हमने define किया, and then we looked at some interesting examples, or examples that are commonly used to model the some of the physical phenomena by using random variables. And we looked at two different varieties of random variables. One was discrete random variables, and the other was continuous random variables. While we studied those examples of discrete and continuous random variables, we also looked at um, how to find the expected value of the random variable, how to find the expected value of a function of a random variable, how to find the cumulative distribution function of a random variable. We also looked at the probability mass function of discrete random variable and probability density function of continuous random variable. They are not the same, but they represent equal things. Both of them try to answer the probability question about a random variable. So PMF use hota hai to answer the probability questions about discrete random variables. PDF is used to answer the probability questions about continuous random variables. And the CDF for discrete and continuous, we have the same name for cumulative distribution function, is basically accumulation of the probability until a certain point. And CDF, either for a discrete random variable or a continuous random variable, can equivalently answer probability questions about that random variable. सो रैंडम वेरिएबल किस तरह का होगा? रैंडम वेरिएबल इस तरह का होगा कि एक एक डाइस रोल किया है 500 दफा, उसमें से कितनी बार जो है आपके पास 6 आ जाएगा, दैट्स अ रैंडम वेरिएबल. एक एक डाइस रोल करते जा रहे हैं until you see the 6 the first time, कितने रोल्स करने पड़ेंगे, that's also a random variable. पीडीसी की लाइन में खड़े हैं, कितनी देर के लिए इंतजार करना पड़ेगा, the amount of time that you have to wait until you get your turn, that is a continuous random variable. Then when you get to the PDC line, the number of people waiting in line in front of you, that is a discrete random variable. It's not continuous random variable because the number of people will take a discrete value. Okay? You will have just 1 or 2 or 3 or 4, some discrete number of people waiting in front of you. So that's a discrete random variable. The amount of time that you will wait in the PDC queue, that queue waiting time is going to be a continuous random variable. So we looked at all of these random variables, and then we also saw in the last couple of lectures a very important kind of random variable called Gaussian or normal random variable. Every random variable is characterized by its CDF or PDF or PMF equivalently, to answer any probability questions about that random variable. Okay, so we also looked at how you can use the normal random variable or Gaussian random variable to approximate some other random variables. Binomial की हमने approximation देखी. Later on in the course, we will see that the normal random variable or Gaussian random variable can also be used to approximate a wide variety of other random variables. खाली binomial को नहीं approximate करता, वो औरों को भी approximate करता है. And there is a theory behind that we will develop, and it's called the central limit theorem. This is one of the two big things in probability theory. The other big thing being the strong law of or weak law of large numbers, law of large numbers, जो ये कहते हैं कि law of large number ये कहता है कि how do we know कि the probability of getting a 6 on the roll of a dice is 1/6. वो इस तरह है कि आप एक
very large number of trials करें, उनमें से 1/6 of the time, 1/6 of the trials will result in the number 6 showing up. So इसलिए उसकी probability 1/6 है. So this comes from the law of large numbers. We'll talk about both of these later on, beyond chapter 7. अगर जितना time मिलेगा, we will see. So today, what we are going to do is we are going to focus on multiple random variables. And by the way, this is chapter 6 from the book. Chapter 6 from the book. You might ask that there are a couple of topics in chapter 5 that we have not covered. In fact, we have pretty much covered everything in chapter 5. लेकिन कुछ random variables ऐसे हैं जो अभी हमने cover नहीं किए हैं उसके अंदर. But really, covering those is not that big of a deal. Gamma random variable है या Cauchy random variable है. उसमें just for saving some time, हमने वो cover कर ली हैं, 4-5 cover कर ली हैं. उनको देख के जो है वो you can cover the other random variables as well. अगर हमें और time मिला तो हम कुछ और random variables या कुछ और topics later on cover कर लेंगे. But we have to make sure that the concept of random variable is very clear to us. We understand what is probability mass function, probability density function. We know how to find the distribution of a random variable, which is a function of another random variable. Yeah. So today I'm going to focus on multiple random variables. In fact, we have dealt with multiple random variables before, but not in unison, simultaneously. किस तरीके से? So let's say you have a sample space. Okay. So if you have a sample space here which has many different outcomes, तो हमने random variable कैसे define किया था? Random variable हमने कहा था कि ये एक ऐसी चीज है कि you take each of these outcomes, ये सारी की सारी outcomes लें, ठीक है? Each of these, और इनको मैप करें onto the real line. इनको रियल लाइन के ऊपर मैप करें, और रियल लाइन के ऊपर जब मुख्तलिफ वैल्यूज के ऊपर इनको मैप करते हैं, दैट इज व्हाट यू गेट एज अ रैंडम वेरिएबल. ये आपको एक रैंडम वेरिएबल मिलता है, ठीक है? सो ये एक पर्टिकुलर मैपिंग आपको एक रैंडम वेरिएबल देगी. लेकिन हु इज टू से कि मैंने एक ही मैपिंग करनी है? मैं कोई डिफरेंट मैपिंग भी कर सकता हूँ, कुछ और भी कर सकता हूँ, एक और मैपिंग कर सकता हूँ also onto the real line, ठीक है? और यहाँ पे I can take these outcomes, ये सारी outcomes लें और इन outcomes को जो है वो मैप कर दें इस real line के ऊपर. So you can get another random variable from the same sample space, another random variable. So you can define as many random variables as you want from the sample space. Okay. आपने क्या करना है? सिर्फ इन outcomes को लेके numbers के ऊपर ही मैप करना है ना. तो किन numbers के ऊपर मैप करना है? It does not matter. आपको एक एग्जांपल देते हैं. So the example is कि you toss a coin, you will either get a head or a tail. बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है. There are only two outcomes. So one possibility is I can say that head means you have this number 46 and tail means you have this number 32. Okay. So this is a random variable which is taking value 32 and 46. X is a random variable which takes values 32 and 46 with probability 1/2 and 1/2. Okay. I can further define another random variable from the same sample space. जो ये कहेगा कि head should be mapped onto 91 and tail should be mapped to 103. टेल को 103 पे मैप कर दें. तो why is another random variable from the same sample space? एक sample space से मेरी मर्जी है, मैं जितने मर्जी random variable define कर सकता हूं. Okay. Now once you define a random variable as a mapping from the sample space to the real number line, okay, then you can answer any kind of probability question about that random variable. For example, I can answer this question: what is the probability x is greater than 5? ये आंसर कर सकते हैं, ठीक है? What is the probability x is between 3 and 9?
what is this probability? ये सारे सवाल probability के, I can answer these questions. I can answer these questions by looking at the probability mass function or probability density function of the random variable. Okay, so now if you think about it कि ये क्या चीज है, ये probability तो हम हमेशा एक event की define करते हैं, तो these are really event. X greater than 5 is an event. X falling between 3 and 5, 3 and 9 is an event. Okay, so ये आपने एक event define किया हुआ है in terms of X. Okay, you can also define an event. You can also define an event in terms of multiple random variables. Okay, so can answer all probability questions. Probability of certain event. और ये जो इवेंट हम कह रहे हैं, ये इवेंट हमने x को यूज करके बनाया है. x greater than 5 is an event, x between 3 and 9 is an event. x को यूज करके हमने ये इवेंट बनाया है. So you can answer our probability questions. For example, the probability of certain event. Okay, and that event is uses x in its definition. ये इवेंट जो है वो x को अपनी डेफिनेशन में यूज कर रहा है. However, I can define an event which uses more than one random variables. Okay, so can also define events, okay, in terms of multiple random variables. क्या एग्जाम्पल क्या हो सकती है? एग्जाम्पल ऐसे हो सकती है कि probability that x is between 2 and 6 and y is less than 14. ठीक है, एक और एग्जांपल हो सकती है probability x is greater than 2y square plus 3y minus 5. ये भी एक इवेंट है कि x is greater than 2y square plus 3y minus 5. जब ये होगा तो ये इवेंट अकर करेगा, और जब ये नहीं होगा ये इवेंट नहीं अकर करेगा. So you can define an event based on multiple random variables. So let's first focus on the discrete case. By the way, multiple random variables continuous भी हो सकते हैं, discrete भी हो सकते हैं, mix भी हो सकते हैं. ठीक है, so let's first look at discrete case. Discrete का केस हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं. And multiple random variables. So we define, recall, PMF was probability x taking a value small x. This was the PMF for a single random variable. For multiple random variables, इसी की simple extension है. For multiple random variables, we have not just one PMF, we have a joint PMF. We have joint PMF. Okay. Joint PMF क्या होता है? Joint PMF is probability x takes a value x and y takes the value y. ये जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये कॉमा के साथ, इसका मतलब है and. This is the intersection of two events. One event is x taking a value x, and the other event is y taking the value y. Okay. So this is denoted by, no surprise here, p x comma y, और नीचे सबस्क्रिप्ट में हम वो दो रैंडम वेरिएबल्स लिख देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक सिंगल रैंडम वेरिएबल के केस में हम एक बड़ा सा x सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं और उसके आर्गुमेंट में स्मॉल x होता है. बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे दो के केस में you will have these two random variables x and y. In case of three random variables, you can similarly define a joint probability mass function for 3 random variables or 4 random variables or 5 or 10 or 100 random variables. ये आपकी अपनी मर्जी है. ठीक है, so probability mass function इसका ऐसे define होता है. An example will clarify this.
An example will clarify this. So I'm going to give you this example. This example is, so let's say you have a box. Let's say you have a box which has 3 red balls, 4 white balls, and 5 black balls. Okay? इस बॉक्स के अंदर ये पड़ेंगे. So pick 3 balls without replacement, of course. जब 3 पिक किए हैं without replacement, ये 3 balls को आपने पिक किया है. We can also do an experiment जिसमें replacement कर दें, लेकिन ये वाला experiment ऐसा है कि आपने 3 simultaneously pick कर लिए हैं, which means that you have just picked these 3 balls one after the other without replacing, or maybe you have picked these 3 balls simultaneously, one and the same thing. So let x is a random variable which defines the number of red balls that you have picked, number of red balls, and y is the number of white balls, number of white balls. So answers in the chat window. What are the possible values x can take? What are the possible values x can take? So x can take values 0, 1, 2 और 3. जब भी हमने 3 balls pick किए, हो सकता है एक भी रेड ना आए, हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है तीनों ही रेड आ जाए. ठीक है? And what is the support set of y, which means what are the possible values that y can take? Y is the same. Y takes the same values, 0, 1, 2, 3. Y can also take these 4 values. Okay. Now, ये तो कोई, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, what is the probability x is equal to 0? You can probably answer that. Probability x is equal to 0. You can answer that easily. What would be that probability? What is the probability x is equal to 0? The probability x is equal to 0. Answers in the chat window. Combinations की शक्ल में दे दें बेशक. So you have to pick 3 balls and you need to make sure that all those 3 balls are not red, which means all of those 3 balls are picked from either the white ball or the black balls. So 9C3 would be a number which is greater than 1, Zoha and Tamur, your answer is partially right. Okay, 9C3 would be the number of ways that you can pick 3 balls such that none of the red balls is picked, but you have to divide it by the total number of ways you can pick 3 balls out of 5, 4, 9 and 3, 12 total balls. So this would be the probability. Okay. So this would be the probability. This is very easy. We have been answering this, since ages. ऐसे ही लगता है जब से semester start हुआ. Now, so I'm going to not ask any other question about only x or only y, because you guys can always answer those questions. I'm going to ask a question which is slightly new for us, and that question is, what is the probability that x takes the value 0 and y takes the value 0? And don't forget that this is something that we had defined as the joint probability mass function. जिस तरह ये सिंगल प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन x का इवेल्युएटेड एट 0 होता है, इसी तरह प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 भी फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 भी फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 भी फाइंड कर सकते हैं. ये और ये सब फाइंड की तो हमारे पास कंप्लीट प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन ऑफ x आ गया. कंप्लीट प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन ऑफ x आ गया. नाउ if I ask this question, what is the probability that x takes the value 0 and y takes the value 0, is equal to the probability that x takes value 0, y takes value 0. This is the joint probability mass function evaluated at one particular point. बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने एक का आंसर दिया है, ये बाकी 3 के आंसर अभी आपने नहीं दिए, वो तीनों भी आंसर देंगे तो फिर पूरा प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन होगा. तो ये एक आंसर है. What is this probability that x is equal to 0 and y is equal to 0? What would be this probability? Answers in the chat window, please.
So any takers here? जी शिजा एंड इब्राहिम आपने सही जवाब दिया, ठीक है। सो दिस वुड बी द प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल भी जीरो है, x इज इक्वल टू जीरो, एंड y इज इक्वल टू जीरो, व्हाइट बॉल भी जीरो है। इसका क्या मतलब है, जो तीन बॉल्स पिक की हैं आपने वो तीनों ही ब्लैक हैं, वो तीनों ही ब्लैक होनी चाहिए, विच मीन्स के नंबर ऑफ वेज यू कैन पिक 3 balls out of these 5 black balls is 5 choose 3 divided by total number of ways you can pick 3 balls out of the 12 total number of balls, 5 plus 4 9 plus 3 12, इसमें से 12 choose 3, yeah. And this will turn out to be 10 divided by 220, 10 divided by 220, okay. Now you can answer any other questions about the joint probability mass function of x and y. So for example, if I ask you question, what is the probability x is equal to 2, y is equal to 3, you should be able to answer that. I'm not going to ask that question. अभी इसको आंसर करने की जरूरत नहीं है, yeah. But you know, I'm going to ask the following. जिस तरह हमने देखा था कि x के अंदर how many values x could take? X could take these 4 values. तो x का probability mass function जो होगा, उसके probability mass function को define करने के लिए I need these 4 things. 1, probability x is equal to 0, probability x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3. ये 4 आंसर अगर मेरे पास आ जाएं तो probability mass function of x is completely defined. How many points do I need? How many different answers like this do I need to define the joint probability mass function of x and y? कितने आंसर्स मुझे चाहिए? आंसर्स इन द चैट विंडो. कितने पॉइंट्स मुझे चाहिए? कितने आंसर्स चाहिए? यस, 16 आंसर्स चाहिए हमें. क्यों? क्योंकि x can take value 0 1 2 3. For each of those values of x, y can take values 0 1 2 3. So the best way of describing this, the best way of writing it down is to draw this kind of a table. एक ये टेबल लोग ड्रॉ करते हैं और जिसमें x की वैल्यूज को यहां पर लिख लेते हैं, 0 1 2 3, और y की वैल्यूज को यहां पर लिख लेते हैं, 0 1 2 3. What we have just found out is the probability that x takes the value 0 and y takes the value 0. P x y 0 0, which is 10 over 220. So this 10 over 220 goes here. Okay. And then you can fill up this table. ये पूरा का पूरा टेबल फिल कर सकते हैं. This will turn out to be 40 over 220. This will turn out to be 30 over 220. This will turn out to be 4 over 220. And this will turn out to be 30 over 220. This will turn out to be, I will quickly fill this up. सारे हमने यहाँ कैलकुलेट नहीं किए, लेकिन ये मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे. 15 over 220, 1 over 220, 12 over 220, and then these guys turn out to be 0. ये क्यों 0 आ रहे हैं अभी आपको बता भी देते हैं. ये इसलिए 0 आ रहे हैं कि हमने 3 बॉल्स पिक की हैं. हाँ, प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी y takes the value 2, ये जो मैंने ग्रीन किया है, this is probability y takes the value 2 and x takes the value 2. Obviously बॉल्स एक टोटल 3 पिक की हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि 2 रेड और 2 व्हाइट आ जाएं, ऑफ कोर्स, ठीक है. सिमिलरली ये बाकी सब जो ये प्रोबेबिलिटीज हैं, ये भी आपके पास 0 आ जाएंगी. ओके, सो now I am going to ask you something more interesting. Yeah. Now if I want to look at this table, if I want to look at this 2-dimensional table and I want to answer the question, what is the probability x is equal to 0? What is the probability x is equal to 0? Okay. Can I look at this table and answer this question, what is the probability x is equal to 0? Yes or no? कौन लोग ये जवाब दे सकते हैं? Just by looking at this table, I know that everyone can calculate. ये हमने ऊपर calculate भी किया है. 9 choose 3 divided by 12, 12 choose 3. We have already answered this question. But can I look at this 2-dimensional table
and try to answer this question, what is the probability x is equal to 0? Can we answer this question? Who will agree that whenever x is equal to 0, then y can take any possible value. Y can take value 0, y can take value 1, y can take value 2, y can take value 3, and this is x is equal to 0 वाली रो. This row is x is equal to 0 वाली रो. Okay. So इसको अगर summation करें तो I will get the probability x takes the value I. Okay. So इसको summation करें so I will get probability x takes the value 0, and that would be 84 divided by 220. कुछ भी नहीं किया मैंने, इन चारों को सिर्फ ऐड कर दिया, you know, the ones which are in the circle. And similarly, if you sum this up, the probability x takes the value 1 is equal to 108 divided by 220. Probability x takes the value 2 will be equal to 27 by 220. And this would be 1 over 220. Probability x takes the value 3. ये भी summation करने से आ गई. Okay. Now I'm going to ask one more question. कि if you look at this column, ये answer आप देखें. This answer. Okay. What is this indicating? ये क्या बता रहा है हमें? Probability x is equal to I. And what is this? We already know what is this. Chapter 4 पूरा का पूरा इसके लिए पढ़ लिया था. So if I tell you probability x is equal to 0 is this, x is equal to 1 is this, x is equal to 2 is this, x is equal to 3 is this. If I tell you all of these probabilities in this column, this is the probability mass function of x. This is exactly what is the probability mass function of x. Probability mass function तो define ही ऐसे करते हैं कि आप जितनी values x ले सकते हैं उनकी corresponding probabilities वो बस बता दें. That is the probability mass function of x. Thank you, Ahmed Zubair and Shiza Munir. Thank you very much. So this is the probability mass function of x. Okay. So इससे हमें lesson क्या मिला है? Lesson ये मिला है कि in order to get the probability mass function of x, all you need to do is summing out all values of y, by summing out all values of y, we can find the PMF of x. Yeah, everyone is okay with that, I hope. अगर नहीं तो अभी क्वेश्चन पूछ लें. किसी का क्वेश्चन कोई? Very important to realize that कि ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन में से मैंने एक x का प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन निकाल दिया. जॉइंट का मतलब है एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल है. यहाँ पे दो का केस था, दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, उनका जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन दिया हुआ था, उसमें से मैंने एक का निकाल दिया. ठीक है. Similarly, of course, similarly, summing out all values of x, we can find the PMF of y. ठीक है. कैसे करेंगे वो ऐसे करेंगे, and I'm going to do that. y is equal to, ये देखें ये y की वैल्यूज हैं, y is equal to 0 करना हो तो मैंने इन चारों को ऐड कर देना है. This is probability y is equal to 0, right? ये आपके पास आ जाएगी. And this is probability y is equal to 1, y is equal to 3, y is equal to 2. ये सारी आपके पास probabilities आ जाएंगी. Okay. Now ये जो probability mass function of x आपने निकाला है या probability mass function of y निकाला है, we are already familiar with these probability mass functions since chapter 4. ठीक है. When you draw these probability mass functions from a joint probability mass function, एक special नाम उनको दे देते हैं, इनको कहते हैं these are the marginal PMF of x or marginal PMF of y. Okay. इनका नाम एक है marginal PMF of x or marginal PMF of y. This is nothing special, only the name is special. This is the same thing as the PMF of x. PMF of x जो है उसको marginal कह देते हैं इसलिए कि वो joint में से निकाला है. Joint में से y को integrate add out कर दिया, sum out कर दिया,
कंटिन्यूस के केस में इंटीग्रेट आउट करेंगे, लेकिन डिस्क्रीट के केस में y को पूरा हमने सम आउट कर दिया, y को सम आउट किया तो आपके पास x का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ गया, उसको कह देते हैं दिस इज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x। क्यों मार्जिनल कह देते हैं? क्योंकि उसमें से हमने x को मार्जिन आउट कर दिया है, y को हमने सम आउट कर दिया है, y को हमने ऐड आउट कर दिया, सम आउट कर दिया। ओके, also note that summation over all x and summation over all y, p x y x y, just like a simple PMF, just like a simple PMF, वो एड अप होके 1 हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से ये भी एड अप होके 1 हो जाता है, ये भी एड अप होके 1 हो जाता है। कैसे? इन सब को ऐड करें, इन सब को ऐड करें, आपके पास 1 आएगा, इन सब को ऐड करें, आपके पास 1 आएगा। वो कैसे? वो भाई ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने x का PMF कैसे निकाला था, ये y वाली सारी वैल्यूज को ऐड किया तो आपके पास ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर इस वाली रो को ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई, फिर इस रो को ऐड किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, और लास्ट रो को ऐड किया तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट रो, सम ऑफ सेकंड रो, सम ऑफ थर्ड रो, सम ऑफ फोर्थ रो, फिर उन सब को ऐड कर दें तो ऑब्वियसली दिस इज द PMF ऑफ x। इसका सम 1 नहीं होना चाहिए, व्हिच मींस कि इन सब को अगर आप ऐड अप कर दें तो ये सम आपके पास 1 होना चाहिए। सो the summation of the probability mass function, joint probability mass function, will give you 1, okay। Now I'm going to ask you some questions, कुछ questions पूछते हैं यहाँ पे। पहला question है, what is the probability x is equal to y, which means कि recall x क्या चीज थी? x थी number of red balls और y क्या था? number of white balls, ठीक है। just look at this table and tell me कि इस टेबल को देखने से आपको क्या पता चलता है? what is the probability x is equal to y, I will leave this table up here, okay? what is the probability x is equal to y? जो x is equal to y वाली जो probability है, that is given by ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, ये पूरे इस डायगोनल को आप ऐड कर दें। इस डायगोनल के ऊपर x और y दोनों इक्वल हैं। देखें पहली वाली जो है यहाँ पे x is 0, y is 0, यहाँ पे x is 1, y is 1, x is 2, y is 2, x is 3, y is 3। इन सबको ऐड अप कर दें तो आपके पास क्या आएगा? तो आपके पास आ जाएगा 10/220 plus 60/220, 10/220 plus 60/220 plus 0 of course, which would be 70/220. Thank you, Zoha. Thank you, Shayan. Okay, so this is very easy to answer. Okay, अगर कोई आपसे पूछे what is the probability that the number of red balls is equal to the number of white balls, so you can easily answer that. कोई और अगर पूछे कि what is the probability that you will have more red balls than the white balls, probability x is greater than y, what is the probability x is greater than y, what would be that probability? अब देखें यहां से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पे x जो है वो y से ग्रेटर है, कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पे x y से ग्रेटर है। सो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट। x is greater than y when y is 0 and x is 1, this is there, okay। y is 0 and x is 2 is also there, y is 0, x is 3 is also there, okay? Y is 1, so x must be 2 or 3, okay, and when y is 2 then x must be 3। ये जो ग्रीन मैंने शेड कर दिया है इनको, इन सबको आपने ऐड करना है, इन सबको आपने ऐड अप करना है, एंड दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी, कि x is greater than y, x is greater than y, x is greater than y। so the probability x is greater than y, इन सबको ऐड कर देते हैं। 12 plus 30 plus 15 plus 1, 42,
57 and 158. 58 by 220. 58 by 220. Lower triangle on the left. Lower triangle on the left. Okay. I'm going to ask one more question. Actually, maybe two more questions. एक तो ये question बहुत आसान होगा. What is the probability y is greater than x? ये upper diagonal हो जाएगा. Upper right वाला diagonal के ऊपर वाली. So this would be this guy here. ठीक है. जिसको add up करें 40 plus 30 plus 4 plus 18. 92 over 220. This will be 92 over 220. Okay. Everyone is okay with that? 92 over 220. So last question that I'm going to ask is, okay, if I tell you, ये देखें तीन balls आपने pick की हैं. If I tell you कि exactly one white ball was picked. If I tell you कि exactly one white ball was picked, what is the probability that there was no red ball picked? What is the probability that there was no red ball picked? Okay. So I'm going to ask this probability x is equal to 0 given y is equal to 1. So don't forget कि ये जो है आपके पास x is equal to 0 is an event. This is an event, and y is equal to 1 is also an event. And we already know how to find the probability of A given B, where A and B are events. How do you find the probability A given B? सबको पता है कि this would be probability of A and B together divided by the probability of B. ठीक है, ये तो early chapter से हमें पता है. So this would be equal to the probability x is equal to 0 and y is equal to 1 divided by the probability y is equal to 1. Okay. Now, what is the probability x is equal to 0, y is equal to 1? Just read it from the table. X is equal to 0 and y is equal to 1 is this guy here. This is the PMF. This is the PMF, joint PMF of x and y evaluated at x is equal to 0, y is equal to 1. X is equal to 0, y is equal to 1, which is 40 over 220. 40 over 220. And what is the probability y is equal to 1? ये कैसे आएगा आपके पास? Probability y is equal to 1 is from the PMF of y, and which is the sum of entries here. Sum of entries here. In सबको आप sum कर देंगे, which is 40 plus 60, 100 and 12, 112 over 220, which will turn out to be 40 divided by 112. This is the probability that x is equal to 0 given that y is equal to 1. Okay, and I am going to mention something here now, जिसकी details बाद में आएंगी. This is called the conditional probability है ये. This is a conditional probability, by the way. ठीक है, लेकिन think about it कि probability x is equal to 0, it's the PMF of x, but this is conditioned on y is equal to 1. This is the conditional PMF of x given y. Okay, given y. So evaluated at x is equal to 0 and y is equal to 1. Conditional PMF of x given y. इसको ऐसे denote करते हैं, PMF of x given y, and x की value हमने 0 रखी है और y की value 1 रखी है. This is what we have found. This is what we have found. Okay. So now I am going to talk about the, हमने PMF के बारे में तो बात कर ली, PMF के बारे में बात कर ली. Before we talk about the PDF for continuous random variables, अभी discrete random variable के बारे में joint में बात कर ली. There is nothing magic here. बहुत आसान सा है, very simple, very simple. वही extensions हैं, वही probability के questions हैं जो हमने पहले आंसर किए हुए हैं, वही conditional probabilities हैं जो हमने आंसर किए हुए हैं. Just have to use the same principles. कुछ हमने नई चीज यहाँ पे अभी नहीं की है, except कि हमने दो random variables को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इकट्ठा consider करना शुरू कर दिया. Okay. So before we move to the continuous distributions, I'm going to talk about the joint CDF.
ऑफ एक्स एंड वाई। तो ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दिया हुआ था, उसमें से वी वर एबल टू फाइंड द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स या पीएमएफ ऑफ एक्स जिसको कह सकते हैं, and the PMF of y or marginal PMF of y. So from the joint, I can find the marginal. From the joint, I can find the marginal. Can I do the same for the CDF? Can I do the same for the CDF? Okay. सबसे पहले तो joint CDF define करते हैं. Joint CDF define करते हैं. So joint CDF of x and y, and again, no surprise here, is f of x comma y, वही कैपिटल f से डिनोट करते हैं, small x and small y is equal to the probability x takes a value less than equal to x and y takes a value less than equal to small y. This is the joint PMF. This is the joint PMF. Okay. Now, can I get marginal CDF? This is the joint CDF. Joint CDF. Okay. Can I get marginal CDF from joint? तो ऊपर हमने देखा था कि joint PMF में से हमने marginal PMF निकाला था, कैसे? रोज को या कॉलम्स को ऐड करके. So can I do the same for the marginal CDF? From joint CDF, can I find the marginal CDF? Okay. To answer that, let's consider fx of a, which is the probability that x is less than equal to a. Everyone agrees with that because this is how we had defined the CDF, cumulative distribution function of a single random variable. इसकी यही definition थी. Where is y in here? Let's try to stick in y here. So if I try to write this as probability x less than equal to a and y takes any value less than equal to infinity, ठीक है? This does not change anything. क्योंकि मुझे पता है कि y will always take a value less than equal to infinity. अगर मैंने इसको इंटरसेक्शन कर दिया है एक ऐसे इवेंट के साथ जो लाजमी अकर करेगा, तो ऑब्वियसली इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है इज द सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट. ये दोनों बराबर ही होती हैं. ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए खुद ही होता है, ठीक है? सो इफ देयर इज एन इवेंट, if I take the intersection of that with y less than equal to infinity, which is a guaranteed event, with probability 1 it will occur. So that means this is simply equal to probability x less than equal to a. Okay. So now this would be equal to the probability limit b going to infinity, x less than equal to a, y less than equal to b. And then I can pull this limit out here and you are left with the probability x less than equal to a, y less than equal to b, which by definition is equal to fxy evaluated at a and b. Fxy evaluated at a and b. Okay. So which is fxy a comma infinity. Yeah. So from joint PMF CDF, I can find the marginal CDF. From joint CDF can find the marginal CDF. Okay. Similarly, f of y b would be equal to f of xy infinity comma b. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे बेसिकली हम ये कह रहे हैं क्योंकि जो CDF कहता है कि the probability that y takes a value less than equal to b is equal to the probability y takes a value less than equal to b and x takes a value less than equal to infinity.
So there is no additional information. X always takes a value less than equal to infinity. वो तो हमें हमेशा ही पता है. तो हमने ये x को additionally उसको बीच में इसलिए डाला है क्योंकि from the joint I wanted to get the marginal. From the joint I wanted to get the marginal. Okay. Now marginal से ये CDF से from CDF, in fact let me just say it, from joint CDF to joint PDF, PMF और PDF, ये कैसे जाएंगे? ये बिल्कुल उसी तरह से जाएंगे जैसे हम पहले जाते थे. वो जो जंप्स आ रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रीट के केस में jumps will tell you PMF values. Jumps in CDF will tell you the PMF values. यहाँ पे joint CDF के jumps होंगे और वो आपको PMF values बता रहे होंगे. And for continuous के केस में how would you find the PDF from the CDF? कैसे निकालते थे? उसको डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन एक दफा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे. नाउ वी विल नीड टू डिफरेंशिएट. एक दफा x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, एक दफा y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे. सो फर्स्ट डिफरेंशिएट, एग्जांपल भी अभी देंगे, f x y with respect to x and then with respect to y, या पहले y से कर लें और बाद में x से कर लें, तो दो दफा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट द आंसर. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल. ये डिस्क्रीट की तो हमने एग्जांपल की थी. आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल. कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल देते हैं जॉइंट के केस में. एंड a few other concepts will also become clear when we talk about these continuous random variables. So example. Okay. So let's say you have a joint PDF fxy is equal to 2 e to the minus x e to the minus 2y when 0 between x between 0 and infinity and y between 0 and infinity. X between 0 and infinity and y between 0 and infinity. So so now I would like to ask many questions about x and y jointly, about x, about y. Before we do that, I will do a इस क्वेश्चन के ऊपर अभी बाद में आते हैं. इससे पहले I would like to define कि ये joint PDF का मतलब क्या है. What is the meaning of joint PDF? What is the meaning of joint PDF? What is the meaning of joint PDF? Joint PMF तो हमने पहले से देख लिया था. Joint PMF हमने देख लिया था. Probability x takes a value 3 and y takes a value 7. That was the joint PMF of x and y. But what do we mean by joint PDF? Okay. So for joint PDF, consider the following. ये consider करें, x is an element of region A. X falls in a region A. A is not an event. A is a region. 3 से 5 तक का रीजन हो सकता है, 7 से 32 का रीजन हो सकता है. एंड y बिलोंग्स टू अ रीजन B, इंटरवल B. ये रीजन या इंटरवल आप जो भी इसको कहना चाहें, रीजन और इंटरवल. ओके. सो दिस वुड बी इक्वल टू हाउ डू आई डिफाइन द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. रिकॉल हमने एक सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे डिफाइन किया था. रिकॉल करें पहले, ये इसका मैं आंसर बाद में लिखता हूं. रिकॉल करें कि फॉर अ सिंगल रैंडम वेरिएबल x we had defined PDF as कि probability x
belongs to this interval a is equal to the integral over a some function और ये जो फंक्शन था इसको हमने कहा था कि अगर एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि probability that x belongs to this interval a is equal to the integral over that interval a of some function. If there exists a function, I call this function the PDF of x. I call this function the PDF of x. This was the definition of probability density function. This was the definition of probability density function. By the same token, the definition of probability density function of x and y jointly, joint probability density function, बिल्कुल उसी तरीके से वो कैसे होगी? Any takers? कोई जवाब देना चाहेगा इसका? कि एक सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए हमने कहा था कि डेफिनेशन ऑफ द पीडीएफ ऑफ एक्स वाज कि एक ऐसा फंक्शन है जिसको इंटरवल ए पे इंटीग्रेट करें तो दैट वुड बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू ए. सो फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स 3 4 5 के लिए कर सकते हैं हम. वो कैसे होगा? सो दिस वुड बी द इंटेग्रल ओवर ए रीजन व्हिच इज अ टू डायमेंशनल रीजन. देखें इंटेग्रल आपको क्या बताता है? इंटेग्रल आपको ये कहता है कि आपके पास ये x है और ये आपके पास फंक्शन है और आपने इसको स्मॉल a से स्मॉल b तक इंटीग्रेट कर दिया. इसको मैं इंटरवल a कह देता हूं, ठीक है. एंड दिस इज दिस एरिया अंडर द कर्व, और इस एरिया को a से b तक इंटीग्रेट कर दें fx dx. ओके. नाउ for the case of x and y, now I am talking about एक टू डायमेंशनल रीजन जहां पे इधर x है और इधर y है. And where is this function? This function is in the third dimension. ये coming out of the board, ये इससे बोर्ड से बाहर आ रहा है, ठीक है. इन माय केस ये आईपैड की स्क्रीन से, या आपके केस में फोन या लैपटॉप की स्क्रीन से ये बाहर आ रहा है, थर्ड डायमेंशन के अंदर है. सो एक्स एंड वाई आर along the two dimensions and you take the integral along x and y, okay, such that y belongs to b, x belongs to a. If there is a function f x y जिसको इंटीग्रेट करें, डबली इंटीग्रेट करें x और y की दोनों की डायमेंशन में, अगर कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है which gives you this probability for every a, for every b, then this is called the joint PDF of x and y. This is the joint PDF of x and y. अच्छा, यहाँ वन डायमेंशन के अंदर अगर आप देखें, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें क्या दे रही थी? यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व दे रही थी. What would the double integration give us? Along this two-dimensional area? ये x और y की two-dimensional area में double integral ये हमें क्या चीज देगा? Answers in the chat window. This will give you the volume. Right? So double integral आपको इस केस में volume देगा, and that volume will be the representative of the probability. Yeah. I'm going to also mention one more thing here. ठीक है, वो जो हमने ऊपर क्वेश्चन पूछा था वो तो क्वेश्चन अभी रह गया क्योंकि पीडीएफ एक्सप्लेन करने लगे. ठीक है, we will come back to that question. We will answer that question today. Okay. So I also want to mention that the probability that x is between 2 and 3, this probability can be answered by the marginal PDF of x. If x is xy continuous. So let's say कि मेरे पास x का marginal PDF नहीं है. We don't have the x का marginal PDF. We have the joint PDF of x and y. And I want to still answer this question. If I want to answer this question, this is exactly the same as saying कि जो हमने यहाँ पे पहले आपसे कहा था कि what is the probability x is equal to 0? Probability x is equal to 0 कैसे निकालते थे हम? x is equal to 0 ऐसे निकालते थे कि आपने y की सारी वैल्यूज को आपने ऐड कर दिया. Now I am asking you this question कि what is the probability x is between 2 and 3?
ठीक है, we know that this should be equal to 2 to 3 इंटीग्रेट कर दें किस चीज को, fx of x dx को, ठीक है, but I don't have this guy available. I have fxy xy available. अगर ये मेरे पास अवेलेबल है तो how do I answer this question? In order to answer this question, I need to find the marginal PDF of x. वो कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे कि from fxy y को इंटीग्रेट आउट कर देंगे, सम आउट कर देंगे, इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस इंटीग्रेट आउट कर देंगे, ठीक है. सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट. वो हम कैसे कर रहे हैं? वो बेसिकली probability x between 2 and 3, this can be written as x between 2 and 3, this can be written as, this is equivalent to that y belongs to minus infinity to plus infinity. I know that the probability of this event is 1. This is an event which is certain to occur. तो इसके साथ मैं अगर एंड कर दूंगा, it doesn't change anything. It just does not change anything. कि एक ही आपके पास एक इवेंट है that x falls between 2 and 3. If I take the intersection of x between 2 and 3 with an event which is certain to occur, this does not change anything. This does not change anything. So this would be equal to x going from 2 to 3 and y going from minus infinity to plus infinity of fxy xy dx dy. In fact, dy dx बाद में dx इसलिए लिखा है क्योंकि ये आउटर जो है वो ये x की लिमिट्स हमने दी है, ठीक है. Now if you focus on this guy here, what is this? This is basically fxy joint pdf में से आपने y को लेके इंटीग्रेट आउट कर दिया है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, उसकी y की सारी वैल्यूज के लिए आपने इंटीग्रेट कर दिया है, विच मींस कि y की सारी वैल्यूज पे सम कर दिया. एंड दिस इज द marginal PDF of x, or simply the PDF of x, okay? So this guy here is fxx dx going from 2 to 3, which is true, which हमें पता है कि ये तो यही आंसर होना चाहिए, x between 2 and 3. अगर y एग्जिस्ट ही ना कर रहा होता, मेरे पास सिर्फ x का एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता, तो मैं सिंपल ऐसे ही निकालता इसको, ठीक है. So this will give you the same answer, exactly the same answer. Now I come back to this question. Okay? And this question is इसको यहां से कॉपी करते हैं और यहां पेस्ट करते हैं. Okay? So you are now given the joint PDF of x and y. x 0 से infinity तक है, y भी 0 से infinity तक है, ठीक है. So how does it look like? इसको हम यहां पे शायद ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, but I can tell you that x is going from 0 to infinity, not from minus infinity to infinity. Obviously ये 0 से infinity तक है, so ये इस रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. How will it look like? तो 3 dimension में मैं यहाँ पे पिक्चर इसकी बना नहीं सकता, but maybe we try to do this. Here you have x, here you have y, so this would look something like ये इस तरह का कुछ लगेगा, एक ये वॉल्यूम सा है ऐसा, which is going in both the direction. Very very bad drawing, but this probably give you some idea कि एक डायरेक्शन में x है, दूसरी डायरेक्शन में y है, और ये थर्ड वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ये आपके पास फंक्शन की हाइट है, ठीक है. So you have x here and y, x here and y here, and this is your probability density function, which is the height of the function, which tells you the height outside the paper. Okay. Now I'm going to ask this a few questions.
So the first question is, what is the probability x is greater than 1 and y is less than 1? Simple question है कि this is a question which involves two random variables which are jointly distributed according to this distribution, So if I am being asked this question, that means I have to consider all the region where x is greater than 1, all the region when y is less than 1. So that means this would be equal to y going from 0 to 1, y cannot be less than 0, and x going from 1 to infinity, because see the range of x and y is 0 to infinity, and this would be 2 e to the minus x e to the minus 2y dx dy. पहले dx लिखा है फिर dy लिखा है, बिकॉज आउटर वाला इंटेग्रल जो है वो y का है और इनर इंटेग्रल जो है वो x का है. ठीक है. So this would be equal to y going from 0 to 1 and x going from 1 to infinity. इसमें से हम इसको minus e to the minus x को इंटीग्रेट करें तो minus e to the minus x आएगा, going from 1 to infinity, and then 2 e to the minus 2y वो बिल्कुल अलग हो जाएगा dy. Okay. So, and this would be equal to 0 to 1 and e to the minus infinity is 0, and this would be equal to e to the minus 1 into 2 e to the minus 2y dy. Okay, so this would be equal to e to the minus 1 integral 0 to 1 2 e to the minus 2y dy. इसको इंटीग्रेट करें आंसर आ जाएगा आपके पास. I can see that this looks like a lambda e to the minus lambda x इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1 उस टाइप की चीज है कि ये एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आप फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट एक्सपोनेंशियल with lambda is equal to 2 is less than 1, probability x is less than 1, कुछ इस टाइप की चीज आप फाइंड कर रहे हैं. Okay, so I shouldn't say x less than equal to 1, probability some random variable taking value less than 1. Okay, so this would be equal to e to the minus 1. This is the CDF of an exponential evaluated at 1, which is 1 minus e to the minus 2. 1 minus e to the minus 2. Integrate करेंगे तब भी यही आंसर आएगा. But if somebody remembers the CDF of exponential distribution, वो डायरेक्टली लिख सकते हैं. अगर वो याद हो तो, नहीं याद है तो इंटीग्रेट करके लिख देंगे. Second question about the same problem is probability x less than y. What is the probability x less than y? Okay. Now, we need to be a little bit very careful, either a little bit careful or very careful or both. So we need to be careful about answering this question because ये एक ऐसा question है जहां पे हमें एक ऐसे रीजन के ऊपर इंटीग्रेट करना है. So I have to do an integration over an xy region, ये 2 e to the minus x e to the minus 2y dx dy, इसकी डबल इंटीग्रेशन करनी है over an xy region. ये मेरे पास xy रीजन है. ठीक है, दिस इज xy रीजन. कौन सा रीजन होना चाहिए? वो रीजन होना चाहिए जहां पे x लेस देन y हो. So I have to integrate it over all small x small y such that small x is less than small y. ठीक है. So I'm going to draw that region. So सबसे पहले think about it कि यहाँ पे 0 है and then this line with slope 1 is x is equal to this is a x is equal to y वाली line with gradient 1. जिसका gradient 1 है ये x is equal to y वाली line है. Now इस line के नीचे वो वाला region है जहां पे x is greater than y. Am I interested in that? No, I'm not interested in that. इस लाइन के ऊपर वाला जो रीजन है वो रीजन है जहां पे x is greater than y, x is less than y, and this is the region of my interest, and this region is going all the way
फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 से कम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि x और y दोनों जो हैं वो 0 से बड़े हैं। सो दिस इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इस तरह जा रहा है, ठीक है। सो हाउ डू आई डेजिग्नेट दिस रीजन, हाउ डू आई डेजिग्नेट दिस रीजन? इस रीजन के अंदर मेरे पास दो तरीके हैं इसको बयान करने के। सो सबसे पहला तरीका ये है कि पहले तो मैं ऐसे इसको बयान करता हूं कि x इज गोइंग, y is going from 0 to infinity and x is going from y to infinity. Think about it, think about it. X is going from y to infinity. देखें ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर, इस स्लोप 1 वाली लाइन के ऊपर x is equal to y है। x is always गोइंग फ्रॉम y टू इंफिनिटी। x जो है वो y से इंफिनिटी तक जा रहा है, और y जो है वो 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है। y 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है। एक ये पॉसिबिलिटीज है, ये जो मैंने रेड वर्टिकल लाइंस लगाई हैं। मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं ये ग्रीन टाइप की हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देता और ये मैं पूरा रीजन कवर कर लेता, ठीक है। सो द अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेम रीजन, और दोनों से आंसर सेम ही आएगा। द अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेम रीजन इज कि y जो है वो कहां, 0 से लेके 0 टू x, y गोइंग फ्रॉम 0 टू, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई, ये तो x लेस देन y होना था। hang on a second, so this is not right, this cannot be right कि y to x cannot be y to infinity, x cannot be greater than y, x has to be smaller than y, x has to be smaller than y. So I just need to fix this. ये जो रेड वर्टिकल लाइंस हैं ये आपको बता रही हैं कि x going from 0 to infinity and y is going from x to infinity. Y is going from x to infinity. These red vertical lines are telling you कि y is from x to infinity and x is 0 to infinity. ठीक है? So x can be very very large, x can be 10,000, but as long as we say कि y is x to infinity, that means कि we are making sure that y is greater than x. ठीक है? Similarly ये green वाली जो lines हैं, green वाली lines में y is going from, y is going from 0 to infinity and x is 0 to y, x is 0 to y. So y can be very very large, y can be very very large, 50,000, as long as we ensure that x is less than y, 0 to y होगा, वो less than y होगा. So this will ensure that we are talking about the region x is less than y. So this would be equal to, दोनों में से कोई सा भी यूज कर लें, या ये वाला यूज कर लें या ये वाला यूज कर लें. So in the integration, let's say I use this y going from, ये green वाला, y going from 0 to infinity and x going from 0 to y, x going from 0 to y, 2 e to the minus x e to the minus 2y dx dy, okay? So इसको इंटीग्रेट करें, अगेन एक्सपोनेंशियल की कुछ प्रॉपर्टीज अगर किसी को जहन में याद हो तो आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज x going from 0 to y, this really is y is equal to 0 to infinity, ये 2 e to the minus 2y मैंने बाहर निकाल लिया, एंड अंदर यहाँ पे आपके पास x going from 0 to y e to the minus x है, so this lambda is equal to 1 वाला ये एक्सपोनेंशियल है, and this is the CDF 1 minus e to the minus y and dy. और इसको अगर और सॉल्व करें मजीद तो this will turn out to be 1 over 3, आपके पास 1 over 3 आ जाएगा. If you had used these red limits तब भी आंसर सेम ही आना था. रेड लिमिट्स हम कैसे यूज कर सकते थे? Let me just write it down. This would have been, or
probability x less than y would be equal to integral x going from 0 to infinity and y going from x to infinity 2 e to the minus x e to the minus 2y dy dx. ये आप देखें मैं x को आउटर लिमिट्स में ले गया हूं क्योंकि आई डोंट वांट कि y जो है वो जो आपके पास फाइनल आंसर है वो आपके पास x या y के टर्म्स में आ जाए. वो आपके पास एक फाइनाइट आंसर आना चाहिए नॉन x नॉन y के टर्म्स में. So one more question about this same problem is what is the probability x is less than a. Now look at this. There is no y here. ठीक है. अगर मेरे पास x का PDF होता तो मैं इसको कट करके आंसर देता. मैं इसको कहता कि this would be 0 to a fxx dx and boom you are done. ऐसे करता ना. But I don't have this guy available with me. If I don't have this guy available with me, I can find this. कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो पहला तरीका इसका ये है कि fxx is equal to integral y going from 0 to infinity fxy xy dy. So y को इंटीग्रेट आउट कर दें. इंटीग्रेट आउट y to get the marginal of x. y को पूरा का पूरे रीजन के ऊपर सम कर दिया जो 0 से इंफिनिटी तक एक्सटेंड करता है एंड देन यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x. ओके. एक तो ये तरीका है आपके पास, यू नो, फाइंड आउट fxx एंड देन यू कैन आंसर दिस बाय यूजिंग दिस. दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्टली आंसर करने की कोशिश करें कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन a क्या होगा? प्रोबेबिलिटी x लेस देन a would be equal to x going from 0 to a and y going from anything to anything, from minus infinity to plus infinity, but we can't have minus infinity because it's only non-zero for y greater than 0. So this joint density function e to the minus 2y dy dx. Okay? This will turn out to be e to the minus x. Okay. And this is by the way is the marginal of x. Marginal PDF of x. Okay. And you get 0 to a e to the minus x dx, which is equal to 1 minus e to the minus a. Okay. Now, I'm going to refer you, एक एग्जाम्पल हम अभी स्टार्ट करते हैं लेकिन we will probably not be able to finish it. वो क्या एग्जाम्पल है? That example is कि you have a circular region. Okay? And in this circular region of radius r, you randomly choose a point. ये किसी एक जगह पे चूज कर लेते हैं. एक कहीं पे भी randomly, equally randomly कहीं पे भी चूज कर लिया. उसका ये वाला distance is x and vertical distance is y. So this point, the coordinates of this point are going to be x comma y, where x comma y are the coordinates. X is a random variable, so is y. X and y both are random variables. Horizontal distance from the origin is x, vertical distance from the origin is y. Okay. Now, what are the possible values x can take? Answers in the chat window. Answers in the chat window. Zero to r. I would claim that this is minus r to r.
क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, -r to r. Okay. Similarly, y would be -r to r, -r to r. Okay. Now, since you can choose any point here, with equal probability, तो अगर इसकी अगर probability density function देखें, it will turn out to be, इसको ऐसे, इसको draw करते हैं, this will turn out to be एक ये circular region होगा. Let me just use a different color for this. ये इस तरह का रीजन है, ठीक है. So there is a certain height of this guy, okay, and you have x here, you have y here. So f of x y, x comma y is some constant c, okay, if x square plus y square is less than equal to r square, okay, zero otherwise. So fx y xy is some constant. This is the same thing जो हमने यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल के केस में की थी कि एक इंटरवल के ऊपर कांस्टेंट आपके पास पीडीएफ था. यहाँ पे आप दो हैं आपके पास. सो चूंकि दो हैं तो वो तो दो हमने एक्स और वाई डायमेंशंस हमने यूज कर ली पेपर के ऊपर. सो थर्ड डायमेंशन जहां पे मुझे डेंसिटी फंक्शन दिखाना है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन दिखाना है, दैट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर. So that is a constant. Why it's a constant? Because it is, you can uniformly choose any point. You can uniformly randomly choose any point over this region. कोई भी point इस circle के अंदर equally likely to be chosen है. Okay. So first part is find C. C find अगर करना हो, हमें पता है कि joint density function x और y पे इसको इंटीग्रेट करें, f x y, this should be equal to 1. This is a density function. बेशक joint density function है, जिस तरह joint probability mass function का sum 1 होता है, इसी तरह joint probability density function का sum भी, integral भी 1 होता है. Double integral is 1. Okay. So how do I find this? How do I integrate this? इसको integration बहुत आसान है. So this is integration over a region where x square plus y square is less than equal to r square. This is the region of the circle. And here you have the density function which is constant, dx dy is equal to 1. Okay. So इस c को हम बाहर निकाल लेते हैं. By this is a constant. C integral x square plus y square is less than equal to r square, dx dy is equal to 1. And what is this guy here? Answers in the chat window. C into कन्वर्जन करें रेक्टेंगुलर टू पोलर कोऑर्डिनेट्स और इसको इंटीग्रेट करें, एक आंसर निकल आएगा आपके पास. यू कैन राइट दैट आंसर डायरेक्टली. व्हाट इज दिस इज इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन ओवर अ सर्कुलर रीजन. एक सर्कल के ऊपर आपने इंटीग्रेट करना है, तो ये सर्कल का आपके पास क्या चीज आ जाएगी? एरिया आ जाएगा आपके पास. ये सर्कल का एरिया आ जाएगा आपके पास. एंड दिस वुड बी पाई आर स्क्वायर. ये सर्कल का एरिया आ गया आपके पास. This would be equal to 1, which implies that C would be equal to pi r square. Okay. So C is pi r square. So another question about this same setup is if marginal PDF of x या y, marginal PDF of x, वो कैसे निकालेंगे? Marginal PDF of x निकालने के लिए fx of x would be equal to integrate out y going from minus infinity to plus infinity, fxy xy dy.
integrate out y, you will get the marginal of x. Okay? But we do know that xy is 0 outside the circular region, Okay, so this would be 1 over pi r square, which is c, over a region where x square plus y square is less than equal to r square, dy, which means कि y is r square minus x square under the root. This expression means कि y should be less than equal to r square minus x square under the root. Okay, so magnitude of y. So this would be equal to 1 over pi r square integral minus r square minus x square plus r square minus x square dy, which is equal to 1 over pi r square into r square minus x square plus r square minus x square. So this would be equal to 2 over pi r square minus x square. So the question is, this is the density function of x. Okay. Limits क्या होंगी इसमें? What are the limits of x? X would be from minus r to plus r. Okay. Is this uniform? Yes or no? Answer is in the chat window. Is this uniform? Answers in the chat window. Is this uniform? Well, this does not look uniform to me because इसको x को change अगर कर दें तो यहाँ से आपके पास change हो जाएगा. This does not look uniform. So इसमें when x is minus r, when x is plus r, when x is minus r or plus r, this density function is 0. ये 0 है आपके पास. And when x is equal to 0, then this is 2 over pi r. Okay. And this would be something like this. This is fx of x. Not uniform. This is not uniform. So I should mention something here. Okay. While this is not uniform, okay, important is if y is given, in fact, capital Y is given. If y is given, then the density function of x, which is the conditional density function, then the conditional density function, condition on y value, conditional PDF of x will be uniform. वो यूनिफॉर्म होगा. वो अभी हम प्रूव नहीं करेंगे, उसके लिए हमें चैप्टर के एंड तक जाना पड़ेगा. That will take a couple of lectures. So similarly, you can find the PDF of y. Okay. Oh, थोड़ा time over हो गया. So we will continue this problem next time as well. इसका एक पार्ट रहता है, दो पार्ट रहते हैं, वो हम next time भी cover कर लेंगे. So I will just stop here. If there are any questions, so I will answer those. Otherwise, I will pick it up from here the next time. Quick questions हैं? Any questions? I'm going to stop the screen share. If there are still any questions, कोई भी questions हो, पूछ सकते हैं अभी. No questions? All right, so I will close the session now. And I'll see you on Tuesday, next Tuesday. There is no quiz on Monday.
there is no homework being assigned for Monday or Sunday. So we will assign the homework next week, and we will have a quiz the following week. Okay, not coming Monday, but the following Monday we will have a quiz. उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले जो है वो हम एक होमवर्क भी ड्यू कर देंगे. Okay, thank you very much.